Hello friends, hello my dear students. Here I am Dhruva Patel at the Aradhya classes CTM. In our last session we have started with the reproduction in a living organisms, and I have explained you the types of the reproduction, that is the asexual reproduction and sexual reproduction. Now अभी बेटा हम लोगों ने उसका डिफरेंस भी डिटेल में देखा था, बट now we'll start with the types of the asexual and sexual reproduction. So for that, first I will explain you all the types of the reproduction in form of the chart, and then we'll start detailing of each and every types of the reproduction. So now we'll start with the types of the reproduction. Now the first is the asexual reproduction. Asexual reproduction. And as you know, the another one is the sexual reproduction. Sexual reproduction. Fine. Okay. Now एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस आपको पता है, अभी हम लोग उसके टाइप्स पे जा रहे हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बहुत डिफरेंट टाइप्स है. दैट इज फर्स्ट इज अ फिजन. फिजन का मीनिंग होता है सिंपल splitting of one living organisms into the one or two or many organisms, and on the basis of that the fission is again divided into the two types, that is the binary fission and multiple fission. Fine. Binary fission and multiple fission. Now the binary fission is again divided into the three types, that is on the basis of the direction from which the main or parental living organism starts dividing. So on the basis of the direction, the binary fission is again of three types, that is the simple binary fission, simple binary fission, then transverse binary fission, and next one is the longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission. Now this is about one type of the asexual reproduction, this is the fission. Another type of the asexual reproduction is by the budding, means bud formation होता है और उसमें से नया living organism बनता है. And the next type is the fragmentation. One more type of asexual reproduction is fragmentation. So these are the basic types of the asexual reproduction, by which the basic types of the organisms and unicellular organisms reproduce by, मीन्स कि बेसिक ऑर्गेनिजम्स और जो बहुत ही यूनिसेल्यूलर और बेसिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स है वो इससे रिप्रोड्यूस होते हैं. Fine enough. Now one more type of a special asexual reproduction is there in a plant, and that is known as the vegetative propagation. That is specially for the plants only. These you must have to remember. Vegetative propagation, we can say. This is a special type of a asexual reproduction in case of the plants, where the reproduction or asexual reproduction occurs with the help of the vegetative part of the plants, and they are nothing but a root, stems and leaves.
मीन्स बेटा प्लांट्स जो है वो मेनली 2 पार्ट से बने हैं, दैट इज द वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट. तो अगर उससे रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फाइन. नाउ दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अगेन ऑफ अ 2 टाइप, दैट इज द नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड. नेचुरल मेथड and next one is the artificial method. ओके, नेचुरल मेथड्स जो है उसमें वो आएगा बेटा कि नेचुरली इन सम स्पीसीज फ्रॉम द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स द न्यू प्लांट्स अराइज, दैट इज नोन एज द नेचुरल मेथड एंड दैट इज द रनर, शक्कर, rhizomes etc. These will study in a detail. Now आर्टिफिशियल मेथड जो है बेटा तो उसका मीनिंग ये है कि प्लांट्स के जो भी वेजिटेटिव पार्ट है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, उसमें से इन सम स्पीसीज वी कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय सम आर्टिफिशियल मेथड एंड दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो दीज आर कटिंग, layering and grafting. Fine enough beta, and we'll study each and every types of the asexual reproduction in a very detail. Fine. Now the next type of the reproduction is a sexual reproduction. Beta, so there is no such kinds of the sexual reproduction like asexual reproduction. You always have to remember that वर्ल्ड में बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स जो है that is similar in all the living organisms. भले वो कोई भी क्लास में से बिलोंग कर रहा है, बट इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इवेंट्स आर सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बेटा यहाँ पे मैं इवेंट्स डिस्कस कर रही हूँ कि वर्ल्ड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये इवेंट्स होती है. फाइन. नाउ वन मोर थिंग बेटा, इवेंट्स की जो सीक्वेंस है ना वो सेम टू सेम मेंटेन होती है सब में, बट प्रोसेसेस जो है दैट माइट डिफर इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो इवेंट्स है वो सब में सेम रहेगी, सीक्वेंस भी सेम मेंटेन होती है. फाइन इनफ. ऐसा नहीं है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सम ऑर्गेनिजम्स जो है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन्स, सम बाय द रनर, सम बाय द बर्डिंग, नॉट लाइक दैट. फाइन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम इवेंट्स देखेंगे बेटा. सो फर्स्ट प्रोसेस इज द प्री फर्टिलाइजेशन मेथड्स और इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ओवर हियर. सो पहले होगा गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि दोनों पेरेंट्स में मेल एंड फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस. फाइन. That is known as the gametogenesis. Now next one is beta some organisms are unisexual, some are the bisexual. So जो unisexual है मीन्स उसमें एक बॉडी के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, आइदर मेल और फीमेल. तो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बने हैं. सो वो दोनों को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर्स. फाइन ना. सो द नेक्स्ट मेथड इज द गैमेट ट्रांसफर आफ्टर द गैमेट फॉर्मेशन. When both the gametes come nearer to each other, they fuse with one another and that is known as the fertilization.
that is nothing but a fusion between male and female gametes. Now beta, third one is the post-fertilization events that occurs after the fertilization for the development of the new living organisms, that is known as the post-fertilization events. नाउ बेटा दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है उसमें ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होके जाइगोट बना है उसका आगे डेवलपमेंट होगा. सो द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा एंड एम्ब्रियो डेवलप होके नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो ये जितनी भी प्रोसेसेस होगी दैट इज कवर अंडर दी post-fertilization events. So over here we can write as a embryogenesis in a very simple word. Embryogenesis means that is the development of the new living organisms from the zygote. Fine enough beta. So these are the all different methods of the asexual reproduction and these are the events of the sexual reproduction. मैंने बेटा आप लोगों को जैसे बोला था कि वर्ल्ड का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है सो इवेंट्स ये ही सीक्वेंस में मेंटेन होगी. मीन्स चाहे प्लांट्स में हो रहा है, एनिमल में हो रहा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस ही होगा, देन गैमेट ट्रांसफर ही होगा, देन फर्टिलाइजेशन, देन post fertilization events means embryogenesis and at the end of the embryogenesis new living beings can be formed. Fine enough beta. So this is whole about the different methods of the reproduction. Now we'll start each and every types of the asexual reproduction in a very detail. Now we'll start with the different types of the asexual reproduction and first one is the fission. Now first we'll see what is the meaning of the fission. So fission is nothing but splitting of the one living organism to form two or more organism, that is in a very simple language known as the fission. Fine enough beta. Splitting of parental body into two or more parts to form new individuals. And this is simply known as the fission. You can define the fission like this. This is a type of asexual reproduction in which the splitting of a parental body into the two or more parts to forms new individual, or you can write it as a offsprings. You can write it as a offsprings also. Fine enough beta. And as we have seen, the fission is of a two type, that is the binary fission and multiple fission. Now beta, you must have to remember that in organisms who reproducing by the asexual reproduction, they never dies. इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं. वाई? बिकॉज एक पेरेंटल बॉडी जो है वो स्प्लिट्स होके नई बॉडी बना देती है, वो कभी मरते नहीं हैं. नेचुरल डेथ डज नॉट अकर्स इन अ स्पीसीज in which the asexual reproduction occurs. These you must have to remember. Fine. Now we'll start with the binary fission. Fine. Now our first topic is a binary fission.
As beta name itself indicate, binary fission means splitting of the one parental body to form two individuals or two offsprings of a same kind. मीन्स बेटा एक पेरेंटल बॉडी में से जो दो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनने चाहिए वो दोनों सेम होने चाहिए. फाइन. सो ओवर हियर वी कैन राइट स्प्लिटिंग ऑफ parental body into two parts to produce equal sized daughter cell. फाइन इनफ बेटा. एंड यहाँ पे दो प्रोड्यूस होते हैं इसीलिए हम उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं. बट आपको पता होना चाहिए बेटा, इन केस ऑफ द बाइनरी फिजन और इन अ केस ऑफ द ऑल द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितनी भी नई ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं दे ऑल आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर ऑल्सो. फाइन इनफ. सो बेटा नाउ ओवर हियर विल राइट one definition about the clones. अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ what is this clones. So बेटा, at the end of the asexual reproduction, the newly formed organisms are identical to each other with their gene. Or we can say that with the genetical point of view, they all are similar and they are known as the clones of each other. Fine enough. So beta over here we can define the clone as a genetically identical offsprings are known as a clones of each other. Genetically identical offsprings are known as clones of each other. मीन्स बेटा एक ही पेरेंटल बॉडी में से नए ऑफस्प्रिंग्स बने हैं तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक कंटेंट सेम होता है एंड ये सिमिलर जेनेटिक कंटेंट वाले जितने भी नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो सबको हम एक दूसरे का क्लोन्स बोलते हैं. Fine enough. This is not beta only in the case of the binary fission, but asexual reproduction की जितने भी मेथड है सब में है. आपके टेक्स्ट बुक में भी बेटा ये क्लोन्स की डेफिनेशन लिखी है, वो आपको पता होनी चाहिए. Fine enough. And as a result of the formation of the clones, the variation and evolution is not possible at all in this case of the asexual reproduction. As a result, variation and evolution is not possible in these species कि जिसमें asexual reproduction होता है. Fine enough beta. So this is the basic idea about the binary fission. Now we'll understand this binary fission with the help of the diagram. Now we'll start with the different types of the fission, that is the binary fission and multiple fission with the help of the diagram. Fine. So first we'll see about the binary fission. Now, as the name indicate, in a binary fission, one parental body splits to form the टू डॉटर सेल. नेम से ही आपको पता चलेगा बेटा कि एक पेरेंटल बॉडी डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाने वाली है. फाइन इनफ. सो ओवर हियर वी कैन राइट वन पेरेंटल
body form two daughter cells. Okay, now we'll see with the help of the diagram as सबसे पहले सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल बेटा ये कोई पेरेंटल बॉडी है पेरेंटल बॉडी और वी कैन से इट एज अ पेरेंटल सेल ऑल्सो फाइन। तो सबसे पहले बेटा होगा पेरेंटल बॉडी जो है या सेल है उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सो फर्स्ट इज द न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन। सो बेटा उसमें सबसे पहले पेरेंटल बॉडी का न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एट द सेम टाइम साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स डिवाइडिंग, सिर्फ शुरू किया है ना। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, नेक्स्ट स्टेप इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सो ये जो साइटोप्लाज्म एरिया है वो भी फाइनली डिवाइड हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट one parental body get divided into the two daughter cells, two daughter cells. Now beta one more thing, you have already studied about the cell division in your standard 11 in a chapter 10 and you know very well cell division जो है that is of a two type, mitosis and meiosis. In a mitosis type of the cell division, one parental cell divide two forms two new or identical cells. कि नए जो फॉर्म होते हैं उसमें पेरेंटल बॉडी के जितने ही क्रोमोसोम नंबर्स मेंटेन होते हैं। While in case of the meiosis, the newly formed cells containing half number of chromosomes as compared to the parental body. फाइन इनफ बेटा। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो दिस लुक्स सेम लाइक अ माइटोसिस। सो इन केस ऑफ दिस binary fission we can say that binary fission is equal to mitosis type of the cell division or we can say that binary fission is same as mitosis type of cell division. Fine enough beta. So over here we can say this is nothing but in case of the binary fission reproduction is equal to cell division or we can say that cell division कि सेल आप ऐसा बोलो कि डिवाइड हुआ है माइटोसिस से और टू सेल्स में डिवाइड हुआ है, या तो ऐसा बोलो कि रिप्रोडक्शन से एक बॉडी दो बॉडी पे कन्वर्ट हुई है। फाइन इनफ। So over here we can say or we can write one sentence for this, cell division is equal to reproduction. Fine enough beta. Now we'll move on the another topic or another type of the fission, that is the multiple fission with the help of the diagram. Fine. Now we'll move on another topic or another type of the fission, that is nothing but a multiple fission. So first we'll see what happens in case of the multiple fission. So in a multiple fission, first you must have to remember that one parental body get divided into the many daughter cells, as the name itself indicates it's a multiple fission. Fine enough. Okay, so over here we can write one parental body divides into many daughter cells simultaneously. These you must have to remember because एक ही टाइम में
एक जो पेरेंटल बॉडी होती है उसमें साइमल्टेनियसली बहुत सारे डॉटर सेल्स या तो डॉटर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं. Fine enough beta. So for that what happens, first we'll understand by the theory and then we'll go through the diagrams. Fine. So in this multiple fission, first inside the one parental cell the nucleus starts dividing. At that time the cytoplasm area does not surrounds to each and every nucleus. Fine. Okay. So in these first one nucleus of parent divide into many nucleus but at that time the cytoplasm area does not surrounds each and every nucleus. But at the same time cytoplasm area does not divide. साइटोप्लाज्म एरिया का कुछ भी डिवाइडेशन नहीं होता है. इट मीन्स बेटा वी कैन से इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज इन. इट मीन्स एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठा होते हैं. फाइन इनफ. सो एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएट condition arise and then after some times each and every nucleus gets surrounded by the cytoplasm. Then each and every nucleus get surrounded by the cytoplasm, or we can say that now each and every nucleus have their own cytoplasm area. देन क्या होगा बेटा, पेरेंटल बॉडी में से उसका जो आउटर लेयर है वो कोई भी तरीके से बर्स्ट होगा और उसमें से बहुत सारे डॉटर सेल्स बाहर रिलीज हो जाएंगे. Fine, and this is specially occurs in a plasmodium and amoeba. Fine enough. Now one more thing बेटा, plasmodium like amoeba and protozoans में ये होता है, but ये दोनों में बेटा डिफरेंट टाइम पे होता है. अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, so these occur at a particular stage of the life, while especially in case of the amoeba these occurs at the unfavorable condition, at the time of a unfavorable condition. मीन्स बेटा जब भी एमोइबा के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है तो उस टाइम पे वो अपने अंदर मल्टीपल फिजन करता है. Fine enough beta. Now we'll see these multiple fission with the help of the diagram. Fine. Okay. Now we'll see with the help of the diagram. Just for an example, in case of the amoeba, what happens? As you know very well beta, the amoeba is of a irregular shaped body. वो बेटा ऐसे irregular shape की body होती है, but at the time of the unfavorable condition or during unfavorable condition, these amoeba withdraw its फॉल्स फीट, अपने फॉल्स फीट को वो विड्रॉ कर लेगा या तो शुडोपोडिया को, एंड दैट बिकम्स राउंडेड इन अ शेप. वो क्या बन जाएगा बेटा, एट दैट टाइम इट बिकम्स राउंडेड इन अ शेप.
Fine enough. And one more thing, after gaining this round shape, it will forms a hard protective cover up surrounds to itself. वो अपने आप में एक सराउंडिंग में टफ कवर बना लेगा, that is known as the cyst formation. See, likewise, then it forms the tough covering that is known as the cyst. Fine enough. This is known as the cyst during the unfavorable condition. बेटा at that time inside nucleus division होता रहता है, but cytoplasm division नहीं होगा. देखो कैसे. Now inside these, as I have told you, this is nothing but this is the cyst form surrounds to these, and inside that during the unfavorable condition nucleus division तो होता ही रहता है. So this is nothing but we can say that this is the multinucleate condition. ये कौन सी कंडीशन है बेटा? मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन. सो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट दिस इज द न्यूक्लियस डिवीजन. नाउ आफ्टर सम टाइम्स जब कंडीशंस थोड़ी से फेवरेबल होने लगेगी, तब हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अपना खुद का साइटोप्लाज्म एरिया सराउंड्स हो जाएगा. मीन्स द साइटोप्लाज्म एरिया डिवाइड्स इनटू द ईच एंड एवरी न्यूक्लियस. हर एक न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म एरिया डिवाइड हो जाएगा. फाइन, लाइक दिस. This is the hard protective covering. This is nothing but known as the cyst. And after some times or when the unfavorable condition is there, हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में थोड़ा सा ऐसा साइटोप्लाज्म एरिया कवर हो जाएगा. फाइन इनफ. So this is nothing but nucleus surrounds each nucleus gets surrounded by the cytoplasm area. Fine enough. And when fully favorable condition is available during favorable conditions, ये जो सिस्ट बना था ना ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एक जो पेरेंटल सेल था उसमें से बहुत सारे डॉटर सेल्स या तो डॉटर एमोइबा एक साथ रिलीज हो जाते हैं. एंड देन ईच एंड एवरी ऑफ दैट can live their life as a independent organisms. So we can say that during these multiple fission, one parental body get divided into the many bodies. Fine enough. देखो बेटा कैसे होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब ये सिस्ट ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा. देखो ये सिस्ट जो था वो ब्रेक डाउन हो गया है. एंड साइमल्टेनियसली बहुत सारे एमोइबा जो है वो अपने इंडिपेंडेंट न्यूक्लियस के साथ बाहर आ जाएंगे. दिस इज नथिंग बट नोन एज द डॉटर सेल. एंड देन दिस डॉटर सेल विल गेन द ओरिजिनल शेप ऑफ द एमोइबा. हर एक का बेटा फिर जैसे एमोइबा का शेप होता है ना, ऐसे शेप आ जाएगा. एंड दिस इज नोन एज द इंडिपेंडेंट एमोइबा. Fine enough. So likewise, one parental body get divided into the many bodies, especially during the unfavorable conditions. And in case of the plasmodium, this type of multiple fissions occurs during the special stage of the life. Fine enough. So beta, this is whole about the multiple fission. Now we'll move on the another type of the asexual reproduction, that is the budding. Okay, thanks all of you. Now our next topic for the next video is the next type of the asexual reproduction, that is the budding.